methane is 21 times more harmful to the ozone layer as compared to the carbon dioxide. So any organic matter buried into the anaerobic condition where there is no oxygen, it will produce methane. Perils of living on Earth are many. Every day, our planet is facing issues and getting cornered as far as environment is concerned. When we look for the culprit, all eyes turn to one species, and that is Homo sapiens. That is us, the greedy humans. If you have visited the Achan, what they call landfill, which is a heap of mud-covered raw waste, stinking and bubbling there. I see 2 time bombs left for future generations, because in the absence of oxygen, the nitrogen becomes NH3, ammonia, smells like a urinal. The sulfur, in the absence of oxygen, becomes H2S, smells like a rotten egg. And that is what causes the stink in dumping grounds where the waste is in a heap without any air reaching it. It will be visible to you in pond where somebody has thrown garbage or a thing, some bulbul and some kind of those little bubbles coming out. That is the methane which is getting escaped, and people living around that, or you stand there, you inhale lot of methane. If you remain longer time there, you will become unconscious, because methane damages the neurosystem. Imagine a rotten tomato. If you keep it in the sun on a windowsill, after 1 week, it can dry to powder. If you keep the same rotten tomato inside a plastic bag, keep it in the sun for the same time, it won't dry to a powder. It will give you a stinky, smelly liquid that is called leachate, because in the absence of air, you get liquid. And you get a lot of stink. You can avoid bad smell by closing your nose, something like that. You can avoid getting sick by not eating a bad smelly material, but you can't avoid breathing bad air throughout the night, throughout the day, and all. So you are more exposed to bad air. So you are sending all the pollutant on top of the head, and whatever it goes up, it will come down. It's always a great pleasure to be alive, loved, and be part of the earth. I'm neither alive nor loved, but I am an inseparable part of the planet. I'm not looking for love because I know I'm hated and I can't even be alive. But who needs life when one is about to rule? Hi, I'm Garbage, and I love my wasted life. I'm an issue around the world for people, but not like what the Indian subcontinent faces, where I live freely and everywhere I want. Let's talk of one place particularly that I rule and wish to engulf. It is none other than the loved Kashmir. हमने कचरे को कचरा समझा, जबकि कचरा हमारे लिए कचरा नहीं है। यदि कचरे का हम उचित पद्धति से उपयोग करते तो ये कचरा हमारे लिए बिजली बन सकता था, ये कचरा हमारे लिए खाद बन सकता था, और इस कचरे का उपयोग हम देश की समृद्धि और विकास के लिए उपयोग कर सकते थे। डंपिंग ग्राउंड के ऊपर या जगह जगह पर रखे कचरे को लोग जला रहे हैं। जलाने से कई तरह की दूषित गैसें निकल रही है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एवं वातावरण के लिए अत्यंत ही हानिकारक ही नहीं, मृत्यु के मुख तक ले जाने वाली जहरीली गैसें हम उसमें से उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी कचरा जो आता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो नहीं होके उसके अंदर कई तरह का प्लास्टिक है, कपड़े हैं, पत्थर हैं, कांच के टुकड़े हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं।
तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता तो उसका खाद बन जाता, लेकिन ये सब चीजें बायोडिग्रेड नहीं होती है। इसके लिए हमें एक सेग्रीगेशन करना पड़ता है। सेग्रीगेशन करने के लिए हमें मशीनों का उपयोग करके खाद को अलग करना पड़ता है और जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हमें अलग करना पड़ता है। The most harmful part of the garbage which man artificially makes is plastic filled with a number of toxic chemicals. Therefore, use of and exposure to plastics has been linked to a number of health concerns affecting people around the world. In Ireland, they wanted to minimize the use of carry bags. So they have a 5-cent tax in every bill. If a plastic bag is given, the price of it is added in the bill. When people see that, they say, why should I pay? I can as well bring my bag from home. So what we need to strictly enforce is not a ban on the carry bags, but a ban on the shopkeeper giving it free. He must separately indicate it on the bill. Then it strikes people that they can as well bring their carry bags from home. The processes of making, storing, disposing of and just being around plastics can be extremely harmful to living things. The people living near dumping sites suffer the most. Atchi bemari, Khuda rachin aidin gorun cancer. Ye bachi chhe lakdi bachi taman chhe chhaati gamse kharab. Dani chhe vavan, tati chhe so aab asan. Insan chhe dapan bu gosus khabar god vatha. Trava ki sore de bacala. Öd chhe divan asan thop yem sadi ki asan pakan tem chhe divan asan thop. वो चीज मैं मानो ने जैसे 4 कनाल या 5 कनाल छी यम छी अगर बय अथ वात मे छी बिचा कर आ दक्षिण खोर छना जमीन जनाब फसल तुत बनान की अमुक आब छु जनाब नेबर तरन या दक्षिण खोर था वो गुपुन लकुड़ बचुन बना त्रावन या पर की आ छ हून बोड वसर जन त्रावन तमिस हून करा अटेट खन तो लक्टिस बचस क्या मानस हून जनाब वो खतरनाक हून छु मकर हून दानिया छ मास वावान मन खास कीमत तुल दिख फल दार दार या टूर जन चे अमुक त्रेश या गुपुल जन चे अमुक त्रेश से ऑटोमेटिक मरित. Imagine the waste which you may have seen uncleared in front of your house, stinking and giving out. Imagine a hill of that, just covered with mud. It's not going to solve any problem. Inside, it is still decomposing, generating methane, and if you go to Achan, you will see some pools of leachate on the surface, and you can see the methane actually bubbling up, visibly bubbles through the leachate. That can speak to you and show you how much pollution and climate damaging gases we are generating willfully by making a huge anaerobic heap of airless heap of waste. Using procedures like windrow management is creating hope that waste won't stay harmful. On the other hand, it turns the waste and garbage into a resource. सबसे पहले इसको हम जब अनलोड करते हैं तो हम अपना इसमें कल्चर ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें बायो कल्चर, और साथ के साथ ही इसको हम सैनिटाइज करते हैं इमीडिएटली जो ही माल नीचे गिरता है. उसके बाद हम इसको जेसीबी के ज़रिए ये विंडरो प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं. So a windrow is just like parking lot management, very simple to do to stabilize the waste. You unload it in a heap which is about 2.5 meters high maximum, 2.5 to 3 meters wide, and as long as required for the day's waste. And every week for 4 weeks you just turn it inside out, so that every part of the waste gets some air. And once air and oxygen comes, the smell goes, the leachate is not formed. The heap becomes so hot with its own biological activity that it kills all the weed seeds. It's like you pasteurize milk by heating it. The waste also becomes pathogen free from the heat of the heap.
Plastics in garbage are composed of major toxic pollutants and have the potential to cause great harm to the environment in the form of air, water, and land pollution. Put simply, plastic or waste pollution is when plastic or waste has gathered in an area and has begun to negatively impact the natural environment, creating problems for plants, wildlife, and even human population. Often, this includes killing plant life and posing dangers to local animals. It's an absolute environmental disaster, and we have recommended that these heaps of raw waste should be opened up and bioremediated, which means you shave it off in 6-inch layers, inoculate with composting biocultures, form it into windrows on that heap itself, and turn it a few times. The volume goes down, smell goes down. You screen it with a fan. The plastics comes out, which you can collect for recycling or for road making, and the organic manure, which will be mixed with some soil. We call it bio-earth. That is useful for farmers, useful for greening your hillsides. हफ्ते में आप देखो कि इसमें ना बदबू है, इसमें ना कौवे बैठे हैं, न चील बैठे हैं, न कुत्ते बैठे हैं। इसका प्रोसेस थर्मोफिलिक जो है, इसमें जो हीट अंदर से डेवलप हो जाती है वो चालू हो जाता है विद इन 24 to 48 आवर्स में। कोई भी जानवर नहीं बैठ सकता है, कोई भी इसमें रिपेलेंट एज एन एजेंट काम करता है ये हमारा ट्रीटमेंट, तो कुत्ते वगैरह सारा न्यूसेंस खत्म हो जाता है। तो ये जो विंडो है आप देखेंगे इसकी हाइट भी कम हो गई, करीबन 1 हफ्ते में आधा मीटर इसका हाइट कम हो गया। तो इस प्रोसेस को हम 1 महीने तक करते हैं। इसको हम 4 बार टर्निंग करते हैं आफ्टर एवरी 8 डेज। 8 डेज के बाद इसको जब टर्निंग करते हैं तो फिर 8 डेज के लिए हम ऐसे रखते हैं जब तक ये पूरा गार्बेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू बायोअर्थ और कंपोस्ट में। As population continues to grow, so does the amount of garbage that people produce. On-the-go lifestyles require easily disposable products such as soda cans or bottles of water. But the accumulation of these products has led to increasing amounts of pollution around the world, including Kashmir. मिक्स्ड वेस्ट आता है, इसमें आप पॉलीथीन देखेंगे, कपड़ा देखेंगे, घर का बचा हुआ खाना देखेंगे। हमारे इधर जो वाजवान वगैरह होता है उसका जो बचा कुचा होता है वो इसमें आ जाता है। हमारे इधर लोग चिकन मटन वगैरह बहुत खाते हैं, चिकन वेस्ट काफ़ी आ जाता है इसमें, करीबन 4-5 गाड़ियाँ आ जाती हैं। वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल रहता है। ये जब 30 दिन के प्रोसेस में वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू कंपोस्ट। और ये जो नॉन डिग्रेडेबल रहता है जैसे पॉलीथीन, कपड़ा, लेदर वगैरह जो कुछ भी इसमें आ जाता है, पत्थर, वो सारा ऐसे रह जाता है। तो 1 महीने के बाद इसको हम सेग्रीगेट करके वो सारा अलग अलग कर सकते हैं, और बाकी जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो खाली कंपोस्ट रहेगा। उसको हम लैंड फिलिंग में, उसको हम बाग बगीचे में यूज़ कर सकते हैं। Burning of garbage in the open air leads to environmental pollution due to the release of poisonous chemicals. The polluted air, when inhaled by humans and animals, affects their health and can cause respiratory problems. Europeans and American countries, they realized in 1980 that this landfilling is not a good option. They say, okay, let us burn the waste. So they found out a quick fix solution. They bring all the waste and burn it so that it is becoming ash. They were very happy. They found a good solution. Lot of something like 400-500 plants got set up, and after about 9-10 years,
they realize that the people living near these burning places, they have a lot of health problem. Animals have the problem. Cow milk is having intoxicant. Breathing and respiratory diseases are increasing. So they started phasing out, and these redundant units have been lying there across the developed countries, and they are finding some poor countries that incineration is good. You will get money from World Bank and catch hold somebody that this will be very easy. You just burn the waste, all problem is solved. But they don't realize. Somebody who advocates, you tell him, can you stop your breathing for 1 second or even 1 minute? What will be the effect? He is dead. Kashmir has many health resorts that are filled with mesmerizing beauty. But even they have been cleansed by this dreaded disease called garbage. In the laps of the green mountains lies waste. In the flowing waters there is waste. It's a sorry state of affairs. Pahalgam is one of the most well-known resorts, and it narrates its laments through the heaps of garbage. कम से कम आज गुपनस सास ये मूद सह डंपिंग में निवन त्रावन सुबह पद फसल ये शुमारा कह बचन वथा कह बे अमुक यह आब आब वसन सालम प्यार बन त मुसलमान प्यार हेर त प्यार हर कह मुसलमान अत मज त्रेश आज येत्राय पगह येत्राय मज खसान बोन पे पंचायत सयाह तुम ताल तम त्रेश चन मगर यह चेन राय काबिल रूजम कह अत अथ कुन वत कर आबस कुन यह आब बिल्कुल आलूद कोर्मुत अत मज बन तन बेमार तम बेमार ये शुमार दुकानदार आए योर रोजगार खतर और ये 200-300 मीटर यन दूर पहन अतन ोट त्रावान खड़ा और पहलगाम पे अम सह तीजा मश तुम दिव नजर अंद पक कूचा मश आब खराब कर कस्टमर और तमिस गो मश सदान पता। Efforts to curb the menace are bound to bear fruit, like that in the Sarbal area of Pahalgam, where proper treatment of garbage gave relief to local population. लुकस 4 सास गामस में बसान बड़ मुश्किल सख्ती मज वो कोर गवर्नमेंट एहसान अस पे कि आज लग कम से 10-15 दह शुरुआत तो मगर दपान गो शायद अम तल यल मगर वो मेहरबानी वनकस गवर्नमेंट यमो कर बड़ अत दिलचस्पी तो अस वोत आज 5-10 दह गए अत पे वोत वार आराम न खास मुश्किल तो न बदबो यन अगर और गन पे दज गंड या मस गंड। काफ़ी सालों से हम देख रहे थे जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट निकल रहा था पूरे इस इलाके में, इस एरिया में, इस पहलगाम में। क्योंकि यहाँ पे तो ये सॉलिड वेस्ट निकलेगा ही, होटलों में, आम जो यहाँ पे हैबिटेशन है वहाँ से निकलेगा। अगर हम एक बार इसको ट्रीट करेंगे, कहेंगे कि हमने कमाल किया, तो मुझे नहीं लगता ये काम एंड होता है यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये काम यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। हम पहलगाम की बात करते हैं, पहलगाम को बचाने की बात करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होनी चाहिए। सराउंडिंग्स को साफ ना रखे तो मुझे लगता है कि इससे तबाही हो सकती है, खुदा ना करे उत्तराखंड जैसे यहाँ पे भी एपिसोड्स हो सकते हैं। हम आगे भी ये कोशिश करेंगे कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि पूरे पहलगाम के साथ साथ पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस चीज़ को आगे भी जो है अडॉप्ट किया जाए, वहाँ पे चलाया जाए इस चीज़ को। और जो ये काम हो रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। Innovative techniques and products are now available to treat the garbage in a healthy way so that the harm it can cause gets minimized. सैनिटाइज केवल हम सिर्फ इसको हर्बल प्रोडक्ट्स से करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारे वर्कर्स हैं उनको काम करने का अच्छा मौका मिल जाता है और ये अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है काम करने के लिए। उसके साथ साथ हम इसको बायोकल्चर ऐड करते हैं, तो अंदर एक बैक्टीरिया प्रोसेस शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया प्रोसेस से क्या हो जाता है, अंदर एक टेम्परेचर रेज हो जाता है करीबन 60 डिग्री के आसपास अंदर, जिससे कि क्या होता है जो पैथोजेनिस वगैरह जो रहते हैं इस गार्बेज में, जिससे कि बदबू आ जाती है या जो किसी बीमारी के कारण बन जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। Waste is not an issue for one person but a menace for the society as a whole. तो एक श्राइन था वहाँ पे सरबल में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका बैड स्मेल होता था।
उसमें हमने कह दिया इनको कि आप उसको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली पार्क बनाएंगे। वहाँ पे जो सरबल का जो मुकाम था जहाँ पे इन्होंने ये सॉलिड वेस्ट पहले डाला था, इसको ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। उसका लोगों में भी अच्छा रिस्पांस है क्योंकि वो तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अगर आप हर्बल यूज़ करते हैं कहीं पे तो उससे आप जितना बचाते हो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है माहौलियात के ऊपर। Water conservation is already a concern in places ranging from California to India. But the world's water is in great danger because of leaking plastics and waste. Even lakes, rivers and wetlands have not been spared. These too are turning into dumping sites. वुचो गवर्नमेंट क्या कर सानि खतर नाइन सती बून ोट या दरिया फ्लड चलने गो वन ोट तुम त्रो नजर शारे अ वनान नबर नीरन बच्चे नीरान नबर हून बच्चे नीरान नबर इन्फेक्शन गसान छातन तह गंदगी पूरे श्रीनगर गंदगी लगान ये दूध गंगाई मज। If you've ever seen a garbage dump, imagine what happens every time it rains. Then imagine that being in your drinking water. Groundwater and reservoirs are susceptible to leaking environmental toxins. When huge quantity of garbage is dumped in landfills, it interacts with water and forms hazardous chemicals. When these chemicals seep underground, they degrade the water quality. Therefore, proper disposal of waste becomes absolutely essential. So far as municipal solid waste management is concerned, particularly with the Jammu and Kashmir state and thereafter with the reference to the Kashmir Valley, right now we have around 14 municipal committees councillors in Kashmir region. In these 14 municipalities, we have a total population of around 8.5 lakhs. There is a waste generation of around 10,000 empties per month. Only 80% is being collected by the respective municipal institutions and the workers who are working therein. And out of that 80%, 0% is treated right now. Segregation of waste at the source is the sure, short way to properly dispose of waste and convert it into compost and other usable byproducts. म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी बडगाम ने पायलट बेसिस पर पहली बार थ्रू आउट JNK, स्पेशली इन कश्मीर वैली, 5 वार्ड को सेग्रीगेशन एट सोर्स शुरू किया है। इसके लिए भी इन कोलैबोरेशन विद म्यूनसिपल वेस्ट वेंचर्स को हमने कॉन्फिडेंस में लेकर शुरू किया है। इस हवाले से काफ़ी हमें शुरू में दिक्कत भी हुई, ख़ासकर अवेयरनेस विद रिगार्ड टू लोगों के वगैरह, तो हमने काफ़ी हद तक 5 वार्ड को अब इसमें इस दायरे में लाकर सेग्रीगेशन एट सोर्स शुरू किया। सेग्रीगेटेड वेस्ट बाज़ाब्ता प्रोसेस होता है, उसका मैन्यूअर बनता है और जिससे काफ़ी इम्पैक्ट लोगों में भी आया है, काफ़ी शऊर आया है और ये जो म्यूनसिपल रूल्स जो हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का भी उसका ऑन ग्राउंड इतलाक हो रहा है। So after collecting this waste from different localities of Badgam district, especially from the town, from four municipal wards of the Badgam town, this segregated waste is brought to this particular compost unit where the biodegradable material is unloaded here. Now these people are undertaking secondary segregation of the waste because some plastic chips, polythene wrappers, they get mixed with this waste, so that pure biodegradable waste is dumped in these pits, so that compost is made out of it. After the biodegradable waste gets processed in these composting units after a few months, after 2 months or 3 months, then it's taken out from these pits because the turning is being done on regular basis for this biodegradable waste. After every week we undertake turning, and final product, when final product gets ready after 2 months or 3 months, then it's taken out and it's crushed, and finally this is the final product we get. This is called organic compost. For that, to distribute around 50,000 dustbins to our locals and to our these people who are living within the municipal institutions of our Kashmir region. And after segregation, we will be in a position to go for the composting
for that part of the waste which is the compostable, which is the green waste, and for the 13% which is non-compostable, which is the non-degradable part, we are thinking about it as recycling. Suppose one is we will get that segregated waste of plastic, inert, etc. We will take it to our different location and collection sites where we will be having some sort of provisions of it is baling, or we are thinking about it is recycling and making of that pipes, etc. Or we are going to for it is pelletization or granulization, so that we will be in a position to distribute those pellets or those granules to the local these small industrial unit holders or to those brick kiln holders. ये खास से जहाँ पे जमीन अत्यंत उपजाऊ हो जाती है और हमारी फसलों को बहुत फायदा देती है, वहीं पर जो हमारी सरकार या हमारा देश आज रासायनिक खाद पे हजारों करोड़ रुपए का जो सब्सिडी दे रही है, उसमें भी इस तरह का बचाव हो सकता है। और इस तरह का कचरे का एक संसाधन के रूप में यूज करने के बाद में हम जहाँ प्रदूषण दूर करते हैं, तो हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत एवं संपन्न भारत की और आगे बढ़ सकते हैं यदि उचित पद्धति का हमने उपयोग किया। ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस खाद को इस कचरे का अच्छी तरह से खाद बनाया जाए और इस देश को संपन्नता की ओर ले जाए। All is not lost yet, but it is high time that we act before it's too late.